हम्म। स्टार्ट करिए। Okay, sir. Thank you. I hope the session was afternoon, morning session was related to some of the tools which got connected to create AI-based concept maps, AI-based the script generation and the content generation using the Chat GPT and Prompt Jenny. Now, what we are where we are heading and why did we do this? There is a reason I have made it aware that how to get these things familiar. What is the reason? Why did we opted this approach? पहले मैंने कुछ कंटेंट उसका प्रॉम्प्ट के बारे में बात किया, कुछ चीजें हम मैंने कंसेप्ट कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात किया, फॉर्म्स के बारे में बात किया. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. कैन एनीबडी एबल टू कोरिलेट इट? उसका कुछ कनेक्शन है. कैन एनीवन एबल टू से व्हाई डिड वी डू विद द वीडियो क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन एंड एक मैं फॉर्म बनाने का तरीका बताया? एनीबडी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Rest are joining. I'm waiting for the people response. रिस्पॉन्स करिए। The most important reason about learning this thing is that to make whatever we are making or we are teaching, to make it more effective, and also like it saves our time, and so we can use that time for some more reproductive things, to use make some reproductive things. ओके. मैं एक्चुअली मैं कुछ जानबूझ के कुछ अप्रोचेस में रख रहा हूँ. भाई आई एम इंसिस्टिंग. पहले मैंने कुछ कंटेंट के बारे में बताया, उसके बाद वीडियो, एंड देर इज ए कंटेंट क्रिएशन अगेन, एंड देर इज ए फॉर्म क्रिएशन. देर इज ए रीजन. दिस इज कनेक्टेड टू योर एकेडमिक्स. आई एम एक्सपेक्टिंग सम अदर आंसर्स. एनी अदर आंसर्स? कोई दूसरा आंसर देना चाहता है इसके अलावा? एनीवन? हमें क्यों इस ऐसे अप्रोच में क्यों आया, मैं बताते उसको कंसेप्चुलाइज करना पड़ेगा ना. इतना सारा टूल्स कहाँ पर फिट होता है, ये क्यों मैंने ऐसा बना बात किया. देर इज अ रीजन एंड एजेंडा, एंड होलिस्टिकली वी नीड टू कमवेयर, वी नीड टू बाइंड टुगेदर. हमें व्हाई डिड वी डू इट, व्हाट इज द रीजन? एनीबडी कैन एबल टू स्पीक. अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है. एनीवन वांट्स टू कमेंट? थोड़ा सा और लोग ज्वाइन करने दीजिए, इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ ताकि हमें दूसरा शुरू करने से पहले. और मेरा जो अप्रोच क्यों था, ऐसे हमें क्यों जा रहा है, वो थोड़ा सा बता के आगे बढ़ेंगे हम. वाई आर वी यूजिंग दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, वाई डू वी रिक्वायर नीड ऑफ द आवर, क्यों चाहिए. मैं इसको भी थोड़ा पिच करना चाहता है. लेट मी पिक वन बाय वन एट ए टाइम. नाउ डॉक्टर विनय, do you want to like what is the reason why did we take this kind of approach, video content creation using AI? Can anyone, as per NEP, I'm giving you an hint now. एआई जनरेटेड क्लास क्रिएट कर सके. क्लास में क्रिएट, वो तो है सर, एक बात सही है. एनईपी के दौरान में मैं कुछ इसको कनेक्ट करना चाहता है. एनईपी, एक और वर्ड दे दूंगा, स्वयं. जो हमने बात किया सुबह, स्वयं के साथ क्या कनेक्शन कर सकते हैं? ब्लेंडेड मोड, डॉक्टर एन अजीत और सिंह, इट इज राइट. मूक मूक यूज ऑफ क्लासेस. आईसीटी, नॉट ओनली दैट वन. मैं थोड़ा सा और एलाबरेट होलिस्टिक अप्रोच में इसको मैं दो कीवर्ड दिया, एक एनईपी एंड एक स्वयं. व्हाट इज द रिलेशन नाउ? हमारा जो सुबह जो बातचीत हुआ कंटेंट क्रिएशन में, स्वयं के साथ कुछ कनेक्ट कर सकते हैं हम? On the क्रेडिट, Swayam, नो 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 सर, नॉट क्रेडिट. कम अगेन स्वदेश. on the Swayam portal, we can actually make propose courses and create content on that portal, and डॉक्टर एम विनय, यू आर ऑल्सो राइट. स्वदेश, AI यू too. आर, या यू आर एब्सोल्युटली राइट. किसी का भी मैसेज भी आया इधर, मैंने वही देख रहा था. आप बोलते ही मैसेज आ गया, डॉक्टर विनय टोल्ड प्रिपरेशन ऑफ मूक्स. यू आर एब्सोल्युटली राइट.
व्हाट एग्जैक्टली मूक्स में कितना क्वाड्रेंट होता है हमारा? कोई भी स्वयं कोर्सेज डेवलप करने के लिए क्या कितना क्वाड्रेंट होता है? Yes, sir. पहले Four, क्वाड्रेंट होता है yes, कितना? हाउ four मेनी क्वाड्रेंट? quadrant. यू Four आर quadrants. एब्सोल्युटली राइट सर. व्हाट इज Secondly, फर्स्ट क्वाड्रेंट? e-content or e-tutorial. पहले क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है सर? So, can I speak? या प्लीज यस गो अहेड स्वदेश. Yeah. इट इज So मैं डिस्कशन के लिए छोड़ा है अभी थोड़ी एक 5 मिनट के लिए, we मेरे को had थोड़ा सा आपसे we डिस्कस had करना चाहता है. we had some lectures on NEP and हम्म, four quadrants and other uh, things which government is initiating. So the four quadrants were like first was the e-content, like ओके. finding the appropriate e-content for our course, and then second was the like preparing these tutorials or and then creating discussion forums, and then in the last incorporating quizzes or maybe some. And I think you more or less you told, but let us conceptualize morning things to the connecting. Why did we do this kind of approach? पहले एक मैं बोलना चाहता है, पहले क्वाड्रेंट में हम वीडियो बनाने का बात करता है. Am I right? क्रिएटिंग द वीडियोस. इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट इज क्रिएटिंग द वीडियो, सेकंड क्वाड्रेंट ई कंटेंट लाइक योर ई टेक्स्ट बुक्स, कॉन्सेप्ट मैप्स, एनीथिंग रिलेटेड टू द content. Third quadrant is about assessment. Fourth quadrant is about discussion forum. Am I right? So whatever we discuss from morning till now, as of now, which quadrant we covered? First quadrant में कौन सा tool बैठता है? Anybody? Whatever we used to make with the AI tools, it will come to the quadrant one. Not only that one. I just wanted to make it precise only. We are creating a video content. Which tool we used for making a video content? सुबह हम कौन सा tool use किया था? Um, In video. yeah. एब्सोल्युटली. पहले क्वाड्रेंट आपने देखा होगा तो आप स्वयं का भी देख लीजिए. 4 क्वाड्रेंट में पहले क्वाड्रेंट होता है वीडियो बनाने का. इसके अंदर दो तरफ से बना सकते हैं, एक एआई बेस्ड एंड एक नॉन एआई बेस्ड. उसको हमें सप्लीमेंट्री वीडियो के दौरान भी यूज कर सकते हैं. इसको इस तरफ से वीडियो बनाया तो एक कोर्स लॉन्च करने के लिए, आपको कोई भी कोर्स लॉन्च करना है तो वो 4 क्वाड्रेंट अप्रोच में ही आपको कोर्स को लॉन्च करना पड़ेगा. आप स्वयं पे भी करिए, नहीं तो आपका कॉलेज में भी करिए, आपको पढ़ाई में भी 4 क्वाड्रेंट अप्रोच ही रखना पड़ेगा आपको बच्चे के साथ. यही अप्रोच से आपको एनईपी में भी यही कहता है, ब्लेंडेड मोड ऑफ अप्रोच. somebody told a very right point, that is also blended mode. We need to mix both. Technology and online and offline should be mixed. We have to bring in both the sense. means हमारा पास कंटेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में वीडियो बनवाया मैंने आपसे, उसी के अंदर कंटेंट वीडियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है. सेकंड क्वाड्रेंट में हमें क्या क्या बनाया, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट जेनी से क्या क्या कंटेंट निकाला है हम, जैसा कॉन्सेप्ट मैप बनाया, और उसके अंदर कंटेंट सर्च करने का तरीका पता है, ई बुक्स होता है आपका, रिसर्च आर्टिकल्स होता है सेकंड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में हमें विच टेक्निक विल गोइंग टू कम और असेसमेंट. मैंने अभी जाने के पहले कुछ बता के गया था. Forms. व्हाट इज दिस? Creation of फॉर्म्स. forms, MCQ. यू आर एब्सोल्युटली राइट सर. एमसीक्यू फॉर्म्स होता है, असेसमेंट टेक्निक्स होता है ना. डिस्कशन फोरम के लिए भी हमें क्या 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 यूज कर सकते हैं? अभी जो हमारे चैट बॉक्स है वही डिस्कशन फोरम है, और व्हाट्सअप इज ऑल्सो डिस्कशन फोरम. मैं थोड़ा सा होलिस्टिकली, वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स नाउ व्हाट वी वांटेड टू अचीव इन आवर एआई इन टीचिंग लर्निंग. हमें सिर्फ टूल टूल बोलने से आपको ये सारा चीजें एक होलिस्टिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड वेर इज द व्हाट इज द यूसेज ऑफ इट. I hope you got my concept. Concept is clear. What is my view on these things? Yes. It will going to fit to your requirements.
फिर भी हमें असेसमेंट में भी बोलना है, बात करना है, कुछ चीजें हमें चैटबॉट्स के भी बात करना है, भी बात करेंगे, बट आई वांटेड टू मेक यू रियलाइज दैट व्हाई डू वी गोइंग इन दिस वे एंड व्हाट इज द अप्रोच, व्हाई व्हाट इज द अप्रोच वी आर टेकिंग टू टेक दिस काइंड ऑफ टूल्स। हम रैंडमली नहीं लेके आ रहा है, ये सारा चीजें आपको एक होलिस्टिकली टू फिट इन टू योर रिक्वायरमेंट्स, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? इवन यू कैन मेक द सेम काइंड ऑफ अप्रोच इन योर एलएमएस। पहले आप वीडियो बनाइए, उसका थोड़ा सा इंटरेक्टिव वीडियो बनाइए। आपके पास, सबके पास एलएमएस होगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। कितने लोग एलएमएस यूज कर रहे हैं? प्लीज लेट मी नो इन द Sir, चैट बॉक्स। we are using Moodle. No, sir. मूडल, राइट राइट सर। मूडल में डिस्कशन फोरम होता है, नहीं होता है सर? होता है सर। हाँ, पहले आपको उसके अंदर ब्लॉक वाइज सेशन वन, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 अप्रोच में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं ना। हाँ सर। बट ये उसके अंदर एक फ्रेमवर्क डालने का मौका देता है, बस वो ट्रांजैक्शन करने का। बट आपके पास कंटेंट करने का तो सक्षम होना चाहिए ना। वी हैव टू बी एम्पावर्ड टू क्रिएट द कंटेंट। Content is the main issue, that we could not able to generate the content, means it cannot be inserted into the platforms. The way of approach, we need to look into these things, taking the AI based contents in one hand and other non AI based contents, and making both balanced way of approach and blending together and delivering to the students. That's all. This is the approach we have started now. Now let us dive in further. What is podcast? Podcast का मतलब होता है क्या? What Uh, is podcast? Anybody can able to say? Podcast is when there is some text which is you are listening, like. Digital audio files. Digital audio. You're right, sir. Absolutely. How to make a podcast? We can record and upload in different podcasts website or even in the Platforms. Moodle also platforms. Absolutely right, sir. टाइम है सर बोलने के लिए? 10 पेज में दे दूंगा, 1 मिनट में क्लोज हो जाएगा पॉडकास्ट। मैं आपको 10 पेज का डॉक्यूमेंट देंगे, उसको पॉडकास्ट में कन्वर्ट करना है। कैन यू Hmm. एबल टू डू इट? That is why we need AI. यस, Yeah. एब्सोल्युटली। Hmm. मेरा अप्रोच में कहने का है, पॉडकास्ट को हम बनाना है क्यों? कोई भी डाट सुनने के लिए थोड़ा सा आसान लगता है, आपको बोलने के ज्यादा, अब देखते देखते आपको नींद आ जाता है कभी कभी, उसको सुनते तो जल्दी हो जाएगा ना। सपोज यू वांटेड टू क्रिएट ए टू people conversating in a podcast, how to can we able to do? Anybody is using any podcast development tools? Anybody? पॉडकास्ट क्यों चाहिए हमें? इंटरैक्टिव बनाना है, मोर इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। व्हाई डू वी रिक्वायर पॉडकास्ट? पॉडकास्ट बनने से आपका स्टूडेंट एंगेजमेंट रेशियो इंक्रीज होगा। Definitely, Definitely, sir. if we make some podcast about some chapter book, then it will at least give a summary of it, and at start they can listen it, and then by listening they will be like to know more about it. That will be more interesting way. Absolutely, sir. This is where we need to fill up the gaps now in our traditional approach to our technological approach, that is blended approach. NEP में सबसे पहले महत्व हो जाता है ICT को रिफॉर्म्स में, हर में we have to integrate the ICT in everywhere as a part and parcel of your teaching. If you integrate the ICT, it will be helpful to your transactions. आपको ये आसान लग रहा है, आपको कुछ कठिन लग रहा है? ये जो आपको मैं कोडिंग नहीं सिखा रहा है, सब कुछ मैंने जो भी बता रहा है सिर्फ एक बेसिक कॉपी पेस्ट हो सकता है, उसको अडॉप्ट करने का टेक्निक्स बता रहा हूँ बस। आपको किसी को ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है इससे? एनीबडी इज फीलिंग? हो सकता है टूल ज्यादा हो, बट हर एक टूल हर एक क्वाड्रेंट में चाहिए चाहिए। पॉडकास्ट कहाँ पर बैठता है? It will go to first quadrant. Video, audio, both can be fitted there. Suppose you wanted to launch a course, you are giving some document.
Can you not able to put it in a podcast mode? Yes, it can be. कोर्स को भी खुद का कोर्स को भी पॉडकास्ट मोड पे लॉन्च कर सकते हैं आप. दो आदमी बात करने का तरीका में हो जाएगा वो. सपोज यू आर हैविंग ए रिसर्च पेपर्स. आपको सब लोग रिसर्च लिटरेचर सर्वे कितने लोग करता है? एवरीवन, एम आई राइट? Yes. बट दैट लिटरेचर सर्वे में एक डॉक्यूमेंट मान के चलिए 12 पेज हो, 15 पेज हो, उसको हमें ऑडियो में कन्वर्ट कर सकता है. With the help Yes, of sir. Mm. व्हाट इज द मैकेनिज्म सर? हाउ टू डू इट? सर कोई एआई जनरेटेड टूल्स तो नहीं जानते, लेकिन गूगल्स में ऐसी है कुछ कि राइट अप है, हमने डाल दिया वहां पे तो वो स्पीक करेगा, वो स्पीक का बटन, ऐसा कुछ इजी हम टूल्स जानते हैं। एआई जनरेटेड के बारे में नहीं, तो मुझे यही सर, ये सर हम आपका रास्ते में ही हूँ सर. इजी टूल्स ही बताएंगे आपको, कुछ नया टूल्स नहीं है. मैं थोड़ा अच्छा। सा आपसे सुनना चाहता है. आप करना व्हाट वी नीड टू नो द बैकग्राउंड ऑफ योर रिक्वायरमेंट, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड पुट द थिंग्स इन रिसर्च कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो हियर. आपको एआई इन रिसर्च में भी आप कहाँ से यूज कर सकते हैं वो भी मैं बताएंगे ना. रिसर्च को फोकस करके ही हम आगे बढ़ना है, क्योंकि सबके पास लोड रहता है, सबको सुनने. अब क्या होता है ना सर, रिसर्च करना है तो स्मार्टली वी नीड टू हैंडल द लोड. Now let us dive in further without any ado. Let us share my screen. My screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Anybody heard about Notebook LM? Anybody heard? Anyone? No. Notebook LM.Google. Anyone? I think Madam Nishita, she was asking something on AI in research ethics, right? This is one of the tool which will going to contribute to your requirement. She is there. She sent a message in afternoon. There is a chat box में message किया था इन्होंने. Anybody aware of this tool? What exactly? No, sir. Can you read it? What it is saying, madam? Stating. Think smarter, not harder. The ultimate tool for understanding the information that matters most to you, built with Gemini 1.5. Built with Gemini 1.5 means it is a empowered Chat, with AI. Am I chat right? GPT. Now we want to try. First, you look into my screen, understand the features, then you go ahead. Suppose we are having anything on our data. So I'm going to say, I'll click on create new. It will ask to upload the sources. First and foremost thing you need to understand that what is source. आपको कोई भी कुछ भी डेटा को देने के बाद ही वो बोलते हैं सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग. पहले अपना डेटा डालना पड़ेगा उसको समझने के लिए. इज इधर इन द फॉर्म ऑफ लिंक, इधर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इधर इन द फॉर्म ऑफ Google Drive link. This is a Google initiative free of cost. It is open for everyone as of now. Please try to understand what I am telling to you. It is a free of cost. Now let me choose a document which is available with me. Any document we can take it out. Suppose I am going to take one of the papers. I'll just take one of the paper. I used to do the research, which which will get uploaded there. To get uploaded, it will take minimum 1 minute, not more than a minute. Also, two sometimes depends on your paper length. You can able to see I have uploaded my paper. अभी कोई भी पेपर को समराइज करने में कितना टाइम लगेगा? Dr. Nishita, you are asking the question ethical studies of research AI in research, right? For example, if you want to know how to how much time do you require to summarize the paper?
Some manually takes time 2 to 3 hours लग जाते नाउ हैं. मैंने अभी एक पेपर अपलोड किया, समरी कितने सेकंड में आया? Uh, so 10 seconds. So can we use to generate abstract also? एवरीथिंग इज पॉसिबल मैडम, मैं बता रहा हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल टुडे. देर इज ऑलवेज ए सोल्यूशन इन एआई. हम इंडिया में जुगाड़ का कमी नहीं है मैडम, ये तो मैं स्लैंग यूज कर सकता है, हर चीज का जुगाड़ है. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर टू अप्लाई एंड हाउ टू यूज इट. अब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं, समरी भी बना सकते हैं, इवन पेपर भी बना सकते हैं, बहुत सारा चीजें हैं. बट एथिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड जज द कंटेंट, इट इज राइट और रॉन्ग फ्रॉम योर साइड, दैट्स ऑल. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, the document got summarized. Can you able to see my screen? Yes, sir. Shall I highlight? देख सकते हैं, मैंने पेपर एक अपलोड किया, रिसर्च आर्टिकल, कोई मेरा टेक्निकल पेपर है, उसके अंदर मैंने डाटा डाला है. उस डेटा का इसके अंदर समरी बन के आ गया. इसका कुछ एफएक्यू बनाना है, आ जाता है. एफएक्यू के ऊपर क्लिक करने से एफएक्यू हो जाता है. इट इज वर्किंग ऑन एफएक्यूज, frequently asked answers and questions you can make it. इट इज जस्ट थिंकिंग एंड डूइंग. जेमिनी बिल्ट इन. देखिए आपको क्या आ गया इधर, एफएक्यू हो गया ये, राइट. You can able to do like this if suppose you wanted to add like this. What are the classical features? ये बहुत सारा चीजें आपको काम आएगा करने के लिए, राइट. नाउ हाउ टू मेक द थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग नाउ. आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स चाहिए, मिल जाएगा. टाइमलाइन चाहिए, मिल जाएगा. ब्रीफ डॉक्यूमेंट चाहिए, उस पेपर के ऊपर मिल जाएगा. आपको लिटरेचर सर्वे के करने के दौरान ये सारा चीजें अपने आप बन के आ गए तो टाइम बचेगा ना. Am I right? Somebody put the message. Can you please repeat the process? I'll repeat, Dr. Mehta. I'll going to repeat. I have not started it. I just uploaded a paper that is a notebook.lm, and again I'm going to share the data to you. There is an option is called deep dive conversation to hosts. क्या होता है ये deep dive conversation to hosts? What is this meaning? Can anyone able to say what is a deep dive conversation to host? Can anyone? So maybe we can give some prompts over here, and if you're looking for something specific, let us say we want the text to be in British English or maybe American English, then it can No, convert it. madam. It's just a No, random guess. It's no issues, like madam. Very good. Well effort. talking to the document. And Swadesh, your voice is breaking. I'm saying it is maybe something like talking to the document, talking with the document. Absolutely right. You see the result now. First, observe my screen, generating the conversation and see the output. Then I will going to make you further. हो सकता है दोबारा सुबह के जैसा वॉइस नहीं आएगा तो आपको क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा इसके अंदर. एक मिनट. Let me see first. Let it get generated. मैं सभी को 15 मिनट तक 20 मिनट तक समय दूंगा, चिंता मत करिए. दोबारा प्रोसेस एक्सप्लेन करके आपको, जब तक ये कंफ्यूजन से बाहर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे. चिंता मत करिए. हम आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को चैट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए, मैं आपको डाउट क्लैरिफाई करके ही आगे बढ़ेंगे. This will take some minutes, but it will going to work. Just wait for a minute now. What will going to happen here is it will going to generate a podcast.
I think if it is ready somewhere here, let me look into the other documents if I can able to see. It depends on internet. थोड़ा सा पेज ज्यादा होगा तो थोड़ा समय ही लगेगा. Uh, can you able to listen the audio? Confirm me that your audio is coming. No, sir. No, sir. No, sir. What shall I do? There is no audio. Why this is not coming? Let me stop and share again. Particularly, हो सकते तो मैं टैब सेलेक्ट करके करता है. हाँ, शेयर साउंड करेंगे इधर हो जाएगा. ओके ओके, अब आएगा. Diving deep into the world of हाँ, educational साउंड आ रहा है. data mining. Yes, sir. ओके. Okay. To see if we can, get a little bit closer to that kind of crystal ball situation. Sounds good. Now, we're really lucky to have an expert here to guide us through all this. You bet. Educational data mining, it can sound a little intimidating, Mm-hmm. but really it's just about using data to understand how students learn. Right. We've got a fascinating study done by Mustafa Yacha that was published back in 2022. Oh, I know this one. And he asked this really interesting question. Can we actually predict a student's final exam score just by looking at their midterm grade and what department they're in? It's a great question. I think a lot of people are probably wondering the same thing. Yeah, for sure. So this data set that Yacha used was pretty interesting. Oh, yeah. Tell me more. It was over 1,800 undergraduate students, and they were all taking Turkish language at a university over in Turkey. Okay. Now, the really cool thing about this course is that it's required for all students. Gotcha. It doesn't matter what their major is. Yeah. So you've got this really diverse group of students all kind of mixed together in one course. Yeah, that's a great sample. Yeah, a real melting pot of academic interests and abilities. Yeah, exactly. So one thing I was kind of curious about was why focus on midterm grades specifically? Seems a little, I don't know, random maybe? Well, it might seem random, but there's actually a really strategic reason for that. Okay. So there's this gap, this 2.5 month gap between the midterms and the finals, right? Okay. So that gives educators a window of opportunity. Oh, I see. If they can kind of look ahead and see, oh, these students might be headed for some Let me copy and give you this link in the chat box. How is the conversation? Entire data getting podcasted, and there is a two host. Automatically they are speaking about the papers, right? The thing is that we need to listen to them for some time. Listening will going to help us to remember the things. आपको visual जल्दी समझ में आता है, audio जल्दी समझ में आता है. हमको हमारा content को भी audio बनाना है. This is how we can able to achieve. This is a research assistant first of all. I think you got my point. Yes, sir. So now what I am requesting you all, somebody was asking, do you require another iteration? Shall I make a demo again?
Yes, sir. Let me again inform you. The URL of this is notebook.llm.google.com. Used to create a podcast, used to summarize the document. It is like a research assistant for your research. I am giving you the URL here. Now, there is a home page like this. There is something called create new. Step number 1, click on create new. उसके बाद तुरंत पूछते सोर्स। सोर्स का मतलब आपका गूगल ड्राइव का डेटा हो सकता है, कुछ भी आपको उसके अंदर सिंक करना है कर सकता है। सपोज आई गोइंग टू टेक वन मोर डॉक्यूमेंट, मैं इसके अंदर अपलोड कर दिया। आपको इधर देख सकता है मेरा स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ये घूम रहा है ना, तब तक ये अपलोड नहीं होगा, इधर आपको ये नहीं आएगा। योर सेव्ड नोट्स विल बी अपीयरिंग हियर। तुरंत आ गया, देखिए उस डॉक्यूमेंट का समरी आ गया ये। The research review examines the application of machine learning algorithms to Alzheimer disease and mild cognitive impairment on diagnosis using the brain MRI images। कुछ मेरा कुछ पेपर के वो समराइज करके दे दिया। Suppose if I want to add a brief document, it will going to help me to give me the brief document। आपका लिटरेचर सर्वे में क्या चाहिए, हर एक पेज का थोड़ा सा ब्रीफ चाहिए, उसको हम एक जगह इकट्ठा करके एक रिव्यू पेपर लिख सकते हैं ना। Am I right? Yes, sir. So will it not save the time? Absolutely, sir. Now, again, the features like FAQ, study guide, table of contents, timeline, इतना सारा करने के बाद नोटबुक गाइड के करके एक स्टार सिंबल होता है, उसको क्लिक करने के बाद नाउ यू आर गोइंग टू गेट ए डीप डाइव कॉन्वर्सेशन करके एक इधर ऑप्शन दिखेगा। क्लिकिंग ऑन इट, इट विल गोइंग टू जनरेट अ पॉडकास्ट इमीडिएटली। उसको हम लिंक को कैसे शेयर कर सकते हैं, इसको लिंक डायरेक्टली पेस्ट करिए अपना क्लासरूम पे। विल इट नॉट बी इनोवेटिव, impactful and engaging? Yes, sir. So can we able to achieve it? Do you think it is not feasible to our requirement? So I request everybody to perform the same thing and paste the notebook.llm URLs for generating the podcast. Earlier I have All made right, it. welcome back for another deep dive. Always excited to be back. This time, we're going deep into the world of texture analysis, but in biomedical imaging specifically. Yeah. So, we've got this stack of academic papers all about the subject. Right. And we're going to break it all down for you. Sounds good. Really, we're going to answer the question, how can computers be taught to see texture? Mm-hmm. मैंने पिछले अभी आपके सामने ही मैंने ट्रायल किया था, उसको थोड़ा सा टाइम लगा बट वो बन के हो गया। मैंने प्ले किया। द सेम वे यू हैव टू डू इट एंड गेट मी द लिंक एंड एनालाइज इट। एनीथिंग एनीवेयर एनी प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू अलाउ यू फॉर 10 minutes of time. You please perform the same activity. I'll be there on the screen. Let me know any issues. You please share your screen. I'll help you out. Paste the link after sharing it. As easy as Google Drive. लिंक मैंने आपको चैट बॉक्स में भेज दिया। डू यू थिंक दिस टूल विल गोइंग टू कैटर टू द रिक्वायरमेंट? निशिता, हाउ इज दिस ऑडियो यूजफुल एज ए रिसर्चर? मैडम, ऑडियो कैसे यूज कर सकते हैं, आपको सुनना चाहिए ना मैडम। कभी कभी वो होता है ना, कोई बच्चे को भी आप 10 पेज का पेपर देगा तो वो पढ़ा नहीं पढ़ा अलग होता है, बट सुनने में आसान होता है ना ये पॉडकास्ट। Even एंड वो समराइज भी करके देता है। we can share this podcast to our research community. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर, ये आपका रिसर्च कम्युनिटी में पॉडकास्ट बना के दे सकता है ना। यूज करने के बाद बहुत सारा एक रिसर्च असिस्टेंट है ये, कर लीजिए इसको इसको ट्राई करके इसका यूआरएल notebook.llm का यूआरएल शेयर कर लीजिए चैट ग्रुप में। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? ट्राई करके देखिए हम ना, डॉक्टर शुभम यादव, यू कैन ट्राई इट आउट, यू ट्राई इट, लेट मी सी व्हाट विल गोइंग टू गिव। Okay, sir.
एनी सर हो डाउट्स एज गया? ऑफ नाउ? नहीं हुआ सर। कंग्रेचुलेशंस। आपका लिंक शेयर करिए ना मैडम चैट ग्रुप में। हाउ इज योर एक्सपीरियंस? लिसन टू द वॉइस। बहुत बहुत अच्छा सर। आप उसका लिंक शेयर करके आप उसके अंदर बताइए। सर ये टाइम ले रहा है आप। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मैडम, टाइम लगेगा। डिपेंड ऑन योर हाँ कंटेंट। आई एम गोइंग टू अलाउ यू फॉर 8 more minutes. Do it and paste the URL and take this URL. I think स्वदेश कुमार पेस्टेड इट। अभी थोड़ा सा सुन लीजिए पेपर कैसे इसके अंदर डिस्कस हो रहा है करके। सर मेरा ये फोल्डर आया है। यस, एनी डाउट? एनी डाउट्स? In the add note, what we can do from here? ऐड नोट मतलब आपको देखिए सर, आपको ऐड करना है तो कंटेंट ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते। इट इज लाइक ए बेसिकली रिसर्च असिस्टेंट फॉर यू। Okay. ये गूगल का फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, सबको ये आपको एक्सेसिबल हो रहा है ना। हाउ द पॉडकास्ट इज गेटिंग जनरेटेड नाउ थ्रू एआई, 2 persons आर स्पीकिंग। Explore other all the features and explore and see this how this will going to help you in day-to-day transactions in the research aspect. I'm going to tell you few more tools also. Go through this and let me know.
Any doubts? I hope everybody posted the link. How is your experience now after listening to the things? I hope you could able to deliver. One more thing we can learn from this is that how to present our work. Yes sir, this is what how to save our time. Research के लिए time नहीं होता है, हर चीजें summarize नहीं कर पाएंगे हम. Notebook.google हो, Gemini से फीचर है, आपको पॉडकास्ट बना के देंगे. कैन यू आप जो मिल रहा है उसको यूज कर. एनीबडी वाज यूजिंग दिस अर्लियर? Anyone is using earlier before my communication? Anyone? So any doubts? Can anyone having any doubts? Shall we move further? Yes, sir. Gemini, Yes, ma'am. actually, Any we doubts? no, we don't have any doubt. But Gemini, we have just only seen the advertisement, but we have never used Gemini AI. And You want, madam, it is there. I think you can use it as a chat GPT only. You want to know about Gemini? yeah, sure, sir. I just want to know about Gemini, how it is used and how it can be useful. Not in research, because in research, whenever we put on the things, it becomes public. So I don't think AI is best tool for using in research. मतलब पब्लिक क्या होता है, एक तो आपको सर्वे करना है, लिटरेचर सर्वे करना है, आपका खुद का कंटेंट एआई में डालने से पहले आप देख के ही करेंगे. एंड इट विल नॉट गो दैट मच पब्लिक नाउ. टर्निटिन इज देयर टू ह्यूमनाइज कंटेंट टू मशीनाइज मैकेनिकल कंटेंट आइडेंटिफाई तुरंत कर लेता है ना. Yes, sir. So this is how it will get, but somewhere it will going to minimize our load in doing the research. That is what my opinion. In Yeah. your opinion, if it is there, it should, if it got compromised the data means, no, I don't think it will not going to do it, but it will not going to share it also. इतना जल्दी डेटा आता ही नहीं है उसके अंदर. The upcoming research also, but don't share it. This is for ethical kind of thing. You, if you see feel that this data should not be shared, don't share it. That is also your choice is yours. Okay, sir. Okay. Okay. So I just wanted to ask about one more thing. I think connectivity is an issue here because I'm Yes, not madam. able to listen anything now. No, I no, no, just madam. I am just opening, sharing the screen. okay, sir. Can you able to see the screen? Yes, sir. Okay. It's, Anybody is it's using easy. connecting papers, connected papers? No, sir. I'm not using connecting Canva. Anyone? In No. apart from you, madam, anybody in the team? Anybody heard about this connected papers? Sir, what purpose it is used?
Madam, as the name implies, connected papers means exploring the academic papers in a visual graph. I'll tell you. What is your area of subject expertise, madam? Actually, I work in astrophysics. Astrophysics, right? Let Yeah, us physics. take the same keyword. ठीक है, madam? It will going to build a graph between the papers. I'll show you. Can you able to see the graph? Yes, sir. Wherever wherever you go, it will going to give a bit summary about the data and even papers where connection between the relevant papers will get connected here. Okay, sir. It's a good thing then, sir. Yes, madam. That is the reason I'm sharing. I am sharing it to you all. How much time do we require to build this kind of graph? It takes a lot of time. Very difficult. पहले सर्च करने में ही समझ में आता है कौन सा पेपर कहाँ पर है, उसका उधर से एक्सेस लेना है. यू कैन एबल टू यूज इट एंड यू कैन यूज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट. हो सकता है इसके अंदर थोड़ा सा लिमिटेड एक्सेस भी हो सकता है, अपडेटेड भी हो सकता है. यू कैन टेक अप एज पर योर रिक्वायरमेंट, बट more or less you're going to get some kind of idea. Okay, sir. So I'm giving you this link. I request you to explore your topic using connected papers. I think everybody is into research only. Since AI based research करना है, हमें टाइम बचाना है, तो देखिए आपको मैं एक लिंक दे रहा है. connectedpapers.com का मैं एक लिंक दे दिया. इसको यूज करके अपना टॉपिक के ऊपर ग्राफ जनरेट कर लीजिए. उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो स्निपिंग करके उसको डाउनलोड कर लीजिए. जरा सेव करने का ऑप्शंस होता है, सब काफी सारी चीजें हैं. एक्सप्लोर इट एंड गिव मी द डेटा. आई विल बी वेटिंग फॉर अनदर 4 minutes.
I hope you all explored it. Any doubts? No, sir. How is the experience now with the connectedpapers.com? Where we can able to utilize it? We can use it for making a review paper, so we can get lots of paper connected to that particular topic, and then we can make a review. So will it going to help us in the research point of view? Yeah, definitely. Anybody explored? What is your experience with this tool? So I explored that thing related to my topic. I just found that the people who are working in the same area, it was connected with many lines, even though they were those who have given different theory, they were having few, connection with other papers. So it can be very useful for a person who is particularly want to work in a same domain, and he can or she can be pick those research papers written by those authors, because the author's name was highlighted along with the year. Okay. So it can be easily understand if that person has written such and such paper in that year, and the problem was he picked such and such problem. So it can be understand whatever I explored, I found in that way, year and author. मैडम कुछ कंटेंट भी आता है, और एक चीज है, मैं नेक्स्ट इसका टूल्स जो भी आपको विजुअल फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में देखना है, यही एक तरीका है. और एल्स इफ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस you one more research related thing I just wanted to bring to your notice, that is called semantic scholar. I think majority are using semantic scholar. No, sir. Anybody is using semantic scholar? Anybody? Anyone using semantic scholar? No, sir. Madam, the semantic scholar, let me log in. A free AI powered research for a tool for a scientific literature. It contains somewhere around, can you able to see from all the field of science the number of papers available here in the semantic scholar. Suppose he wanted to search on anything related to any topic. Suppose I wanted to take on artificial or machine learning, the name I'm going to take it machine learning. It will going to give you a lot of papers here Okay, as sir. PDF. You can able to make lot of suppose if you want, it's a field of study can be filtered out, date range can be taken care here, last 25 years कहाँ से आपको करना है. As a PDF it is there, you are open available, like open access है तो कर सकते हैं. Author, if you want to search, you can search. Suppose you wanted to search by journals, that can be taken care through here. This is if you explore, you will come to know it is a fantastic tool. From my point, it is a very good tool for us in research. Okay, sir. You just see, I have just given you that. You please explore and get another 2 minutes. We will move further also. There are so many things we can able to cover it up. Okay, sir. Finding citations. Yes, I'll give you the data, madam. For citation, journal finding can also give the citation number and other things. Madam, can you have you checked out in the semantic scholar now? No, not now. I'm I have going to. given you the link. Please explore it now once. Okay, sir.
Semantic Scholar asks for login Yes, and yes, madam. sign up. Absolutely. It has to be logged in. Yeah, and it reflects No, references no issues, and madam. You can, citation. yeah, yes, it reflects. Now, I think it is just for an information related to your research only we have given. I think many have got it exploded, and there was an question on suggest a good AI tool for finding the citations or AI generator. I think there is a tool called Quillbot. I think many know about it, Quillbot. Anybody know? Yes, sir. You are using it, madam. I think Quillbot is there, Scribber is there. Yes, sir. I have used Quillbot. Yes, it is a fantastic tool. Quillbot is there, Scribber is there, citation generator. Many tools are there. I'm going to post it for you, Quillbot, if you require the URL. One second, there is a call.
Sorry, there was a call. And let us move further for the next step in the things what we need to do, that is called related to the chatbots. So let us ask some of the questions. Are you using any chatbots in your teaching learning? Anybody? No, I've just discussed some of the research related tools which is there. So many tools are there, and there is a semantic scholar. Consensus is also there. Anybody is using consensus? No, sir. It's also one of the tool, is a AI search engine for research only. I'll just share the screen, and you can ask the research, and it will going to give you many things. But this is a tool, and you need to know where to apply and how to use it for your data. What special feature it has, sir? Consensus. I'm just sharing my screen. Okay, sir. The name of the app, that is a consensus. You can use consensus.app. I'm sharing the link to you in the chat box. Suppose if you search for anything related to an image, improve the image quality. I'm looking into the data. You see, consensus is giving me a lot of data now. As soon as you ask anything related to that keyword you wanted to make, that related will get searched, and that too with the citations, with highly cited dated question paper will go, the review papers will going to reflect in this, connecting to that one. Key benefits of image fusion, because if you put anything, the research related questions to it, it will going to give you very good impactful data. With citations, with literature review, it is giving whatever wherever it is there, you can use it for your research purpose. You can copy this, copy the text, copy the citations. If you want, you can able to do it, and it will going to help you in research. Basically, if you want to share directly also, it is possible. Share to X, and if you want to do it as a URL also, can be possible. Yes, so it is giving summary of each and every paper, whatever is demanded by the searcher. Yes. Which is good. Mm. I just wanted to ask you few questions before we dive to the next aspect, that is related to a chatbots. So, what is your view on chatbot, and why do we require chatbots in our need of the hour for everything? Like for our teaching things, teaching to the students, can we able to, not institute can able to take an initiative to create a chatbots in subject wise, and so that you can able to minimal your loads of teaching learning. Asking the students can ask FAQs to the chatbot instead if you are offline or somewhere you are out of station or you're on leave. This kind of initiatives will going to help in taking AI further in next level of teaching. So is it available? Chatbots are available in these kind of things. Where do we see almost these kind of chatbots? E-commerce customer care helpline. Absolutely right, sir. In banking, in other things, why can't we do it for our education purpose?
Can we able to do it? Is there any tool which I got discussed and it was also discussed in previous? Anything overlapping happening? No, sir. No, sir. It is all exclusive things, as and when there is a classes, I used to take the new things only further because it should not get overlap, and the kind of things we are heading is every day we need to update in every aspect of the things. So that is the reason, and every thing which I am pitching in today, it is related to AI. I think many experience this consensus. Anybody now explored? What is your experience in this consensus? Okay. Is it clear? Whatever we discussed as of now, is it clear? No reaction. Yes, sir. Yeah. Yes, Okay. sir. Clear, I clear. have also tried. So Right. Okay. Now I just wanted to ask you a few questions now. We are using many things to generate the contents and giving the feedback and taking the feedback using our transactions, right? In the same case, how to implement a chatbots in our day-to-day transactions? Chatbots, introducing the chatbots to our learning mechanisms. बैंक में होता है सब चैटबॉट होता है, कोई दिक्कत होता तो आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस उससे पूछ सकता है, आइला करके होता है एसबीआई के साथ, आईसीआईसीआई के भी साइट में होता है, बट व्हाई नॉट इट इज इन एजुकेशन सेक्टर? Subject wise chatbots or something called supervised learning about your own content, where we need to give only supervised machine learning. How to do it? We just wanted to share you again, once again. So just wanted to tell you about the things we need, where we are heading on, how to make it more interesting, more engaging and impactful in our day-to-day teachings. So let us go and create a chatbots to our content. Any idea? Anybody is creating the chatbots? Anyone? Can you able to read it? What is this? Droxy. Anybody? yes, sir. Doxy. Anybody used it? No, sir. No, sir, never.
इसका नाम ही सर पहली बार सुन रहे हैं हम। ओके, ये सर क्या देखिए करने को सर, है ये ये? Proxy AI based incredible AI based platform. It will going to create a personalized chatbots. Let me click on try for free. Continue with the Google. ये ड्रॉक्सी एआई कहाँ यूज होती है सर? मैं अभी पहले ये आप देख लीजिए सर, कहाँ पर कैसे यूज करेंगे करके अभी समझ में आएगा। पहले आप एक्सपीरियंस कर लीजिए, मैं क्यों आपको बता रहा है करके। ये एक एजेंट क्रिएट करने का तरीका है। आपको एक बॉट क्रिएट करके आपको पढ़ाने के कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। यूजिंग ड्रॉक्सी एजेंट्स, दिस इज लाइक a personalized chatbots. Is it clear? I'm going to first experience the tool, then you'll come to know where to apply. Let us click on add, click on basic. Now, right now, add knowledge. What exactly add knowledge is? One second. Sir, I'll just call you back. I'm in between the meeting. I'll call you back, sir. Hmm. What exactly knowledge? Right now, an agent is a blank paper. We need to input something that which only it will going to replicate. Now let us add some document to it, either in the form of PDF, either in the form of YouTube, either in the form of Google Drive, either in the form of website, either in the form of text. Let us click on PDF. Select the knowledge file. Suppose I will going to add a download document on anything related to any document. I am going to add one of the NEP document as a source. I'll upload. First look into my screen, then only you do it parallelly later. What is the model here? ChatGPT. Yes. ChatGPT 4, ChatGPT 4 point, Claude, Gemini. How many models you require now? We can One. integrate anything as per our requirement. Gemini, wherever, whatever you require, whatever you can able to do it. Right? Now, restrict response to the knowledge content. No. Yes. Accessibility protected public. Able to see something happening. If I, as soon as I type, there is something getting created here. What is happening now? Any idea? Any idea? One second. Let me open it in a different email. One second.
4.04 आपका था क्या? खरीदा हुआ होगा। नो सर, इट इज एक्चुअली क्या होता है सर, इसके अंदर एजेंट्स बाय डिफॉल्ट 4.0 एवरीथिंग कैन बी इंटीग्रेटेड टू अवर एजेंट। 4.40 को करेंगे तो वो पैसा मांगेगा ना वहां पे। नहीं सर, कुछ जगह पे फ्री में है, मैं यहाँ वही कर रहा हूँ सर, वो हम कर सकते हैं जैसा मैंने अभी बताया था। कुछ जगह पे हम कुछ इंस्टेंस में यूज कर सकते हैं, क्लाउड पे यूज कर सकते हैं, परप्लेक्सिटी में यूज कर सकते हैं। 4 वो आंसर सी आता है उसके अंदर। क्योंकि हमने वहां 4.40 सेलेक्ट किया था तो उसने मांग लिया। नहीं 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 सर, वो क्रेडिट का बात कर रहा था। 1 मिनट, आई डू इट। लेट अस मेक इट पब्लिक। ये 4.0 जो है ऊपर में, ये अगर इस यस सर। डॉक्यूमेंट को रीड करके कुछ भी करेगा तो वो तो पेमेंट मांगेगा। नहीं नहीं सर, वही मैं बता रहा हूँ, यू जस्ट एक्सप्लोर इट वंस, इट विल नॉट गोइंग टू टेक इट। either we can able to disable it also. I'll show you once again. Let it be like this in a default mode. Customizing name of the agent. Can you able to see something is getting typed in this corner as soon as I do something? Yeah, user interface. Yes, Yes. it is getting created. In real time, you are creating a chatbot. Once this has been done, click on create. अरे वाह, created successfully. Welcome Can you to. able to see something now? There is a blank page. Welcome to the reality. Whatever I have typed, I just mentioned. It will only search in that document. Whatever I am giving the data means it is supervised learning. Even we can create offline GPT because it is a technical session and it will take time using Python and LLM models downloading, and we can make an offline GPT also. Without internet also we can make a GPT. It will only search in the document. This bot will going to search only in the document. And let me go back. I'm going to share the link. You can also access. I request how to do it. I'm going to make it a demo again. I'll चलिए, share the link to you. Here in the case, you're going to create a personalized agent, that is through Droxy. Clicking on add is the first step. Let me tell you, there are so many things can be taken care. Basic website, phone, an agent that can answer your customer phone calls on behalf of, an agent that can respond to your customers contacting you on a WhatsApp number. Discord is there, Facebook is there, Instagram is there. Let me tell you, we can automate every aspect of your work. Like there is one more tool called Zapier. It will take time. We can able to automate everything, sending emails, contacting to the customers, everything can automation can able to taken care. An agent for internal use, perfect experimenting and testing is the first option. An agent that can engage with the visitors directly on own website.
कोई भी वेबसाइट में आपको चैटबॉट मिलता है, इस तरफ से वो बन के आता है। एक फोन में एन एजेंट दैट कैन आंसर योर कस्टमर फोन कॉल्स ऑन योर बिहाफ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल हियर। इफ यू क्लिक ऑन बेसिक, द नेक्स्ट स्टेप इज, first you need to identify the knowledge source. If you don't apply the knowledge source, it will not going to work for you. Let me add a knowledge source here. One more document. I'm going to put the PDF. Any PDF. I'm going to put one more IEEE paper. I will upload here. I will only select this paper now. Whatever there is in the paper or whatever you are giving the data here, that much only it will go supervised learning as a chatbot. Just mention the behavior. If you make it accessibility protected, means it will not going to open in public. You have to make it public, then only it will going to work. Agent. Can you able to see? I have just typed the same thing is coming here. We can able to change the app data. Once this is the settings has been done, clicking on create, it will going to create an agent. Right now, I have just used it now. If you want to use it for your personal plan, you can change it and get the data for, or else using the same one, change the knowledge resource and we can use it the same one again and again. Let me go to the editing part of it. I'll edit it. Clicking on manage. Click on knowledge. If you want to update, you can select the knowledge files and update here. It will work like the same way as we discussed earlier. So this is how you can able to use it for your data plans as per the requirement. Now I request everybody to create an agent and chat and you see the output, how is it coming to your requirement. And even one more tool also I'm going to tell you, that is called DID, is also helpful to create this kind of agents. That is also artificial intelligence and it's deep learning only. I'm going to give you that data also. Once this has been done, I'm going to give you 5 to 10 minutes, complete this activity and let me know, could you able to do it? Any doubts? Anyone having any doubts, you can share your screen. I can guide you to create. Anybody? I hope you're trying. The name of the app is called https app.roxy.ai. I posted in the chat box. I'll allow 5 minutes. Do it and get back to me.
सर का लेक्चर तो ऑफलाइन में होना चाहिए था सर। क्या सर? ये सर आप कुछ बोल रहा है? ऑनलाइन में जो फायदा हो रहा है ना, वो ऑफलाइन में नहीं होता। इसका रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड और ज्यादा अच्छा लगता सर। हाँ लगता। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, तो कभी भी बैठ के सुनोगे। ऑफलाइन जी में जी। तो जी सर, जी नहीं सर। सर, ये अच्छा है, मैं गुजरात से वहां तक नहीं आ पाती। हाँ, अरे हम ले आते हैं आपको गाड़ी भेज के। सर इस प्रोग्राम में ये बहुत ही पॉजिटिव है कि आप वीडियोस भी भेज देते हैं जिससे आराम से कई बार सुना जा सकता है। हाँ। इसके लिए सर थैंक्स, थैंक यू वेरी मच सर। आप लोग अभी मैंने रिपोर्ट नहीं लिखा है लेकिन मेरा उसी को बार बार सुन सुन के ही लिखा जा रहा है रिपोर्ट भी। थैंक यू सर। रिपोर्ट ये यूट्यूब के जो सारे आपने भेजे हुए हैं लाइव बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, जो आपने ये रिपोर्ट के लिए भेजा हुआ था सारे 7 जो भेजे हुए थे सारे लेक्चर्स, तो उसमें हमें क्या करना है, क्लिक करना है या फीडबैक है, वो क्या है सर? वो मुझे समझ नहीं आया था तो रिपोर्ट में जो क्या बोला उन्होंने लेक्चर में, उसको समराइज कर देना। हर एक को करना है। आज एक एक लेक्चर हुआ पूरा, एक ही रिसोर्स पर्सन का तो एक ही रिसोर्स पर्सन का, अगर अलग टॉपिक लिए हैं तो अलग टॉपिक। नहीं तो हर रिसोर्स पर्सन का कितना टाइम लगेगा? चार तो बहुत कम लेक्चर्स तो हुए। सर काफी सारे हुए, अभी तो चल ही रहा है काम। टॉपिक डला है ना? हाँ, टॉपिक हेलो चला सर। हुआ है। हम्म। हेलो हाँ बोलिए नितिन। सर। उसको एक ही पीडीएफ में हमने एकत्रित रूप से किया है सभी वैसे लेक्चर को। वैसे ही करना है, वैसे ही ठीक है सर। वैसे ही करना। फिर मैं सबके रिपोर्ट को एआई में डालूंगा और ये नो सर। सर एक प्लैगरिज्म चेक करने के लिए भी सॉफ्टवेयर के ऊपर भी हो जाती है तो बहुत ही अच्छा था, रिफ्रेशर कोर्स। है ऑफ मैडम, इसमें है। ऑफलाइन ऑफलाइन प्लेगरिज्म ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में चेक किया जाता है। मतलब फिर भी ऑनलाइन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। ऑनलाइन ऑनलाइन में कुमुद आपका डॉक्यूमेंट क्लाउड पे आ जाता है। इसीलिए ज्यादातर प्लेगरिज्म जो है वो इसमें ही चेक करते हैं, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर पे। तो बड़ी चीज नहीं है, डॉक्यूमेंट डाला, प्लेगरिज्म की रिपोर्ट दे दी। हाँ जी, हाँ जी। मैं चाह रही थी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो फ्री में ऑफ कॉस्ट हों, जैसे ऑनलाइन ग्रामरली। हाँ। ऑनलाइन ऑनलाइन कुमुद ऑनलाइन प्रेफर नहीं करते हैं। वैसे कर सकते हैं किसी दूसरे का चेक करना हो तो, लेकिन हाँ यदि आप जी। खुद का कुछ लिखा हुआ है तो जब हाँ तक वो जी। पब्लिश नहीं हुआ है तब तक हम्म। वो क्लाउड पे डालने का कोई मतलब नहीं है ना, हम्म। क्योंकि वो एक्सेसिबल हो जाएगा ना, फिर वो एआई में भी आ जाएगा। यस सर, इसीलिए तो मैं एआई के बहुत ज्यादा उसके सपोर्ट में नहीं होती हूँ। जो लोग कहते हैं ना रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टूल है। है 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 जब है कुमुद। कुछ चीज कुछ एक्सटेंड तक ठीक है, ग्राफ वगैरह प्लॉट करना है चलेगा, लेकिन ये है कि आपका खुद का पर्सनल चीज अगर आ गया फिर तो। आप घर में गई और चाय बनाने के लिए आपने बोला कि वो बाल्टी ले आओ और चाय बनाओ, तो वो क्या करेगा? एआई डिपेंड अपॉन योर प्रॉम्प्ट। आप क्या उससे करवाने के लिए जो लॉजिक यूज करते हैं, तो वो उसमें अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर से उसको रिपीट करके हम बना लेते हैं, मगर ये कि टाइम सेविंग है ना। हाँ, टाइम लाइक से रिपोर्ट से कोई क्लैरिकल वर्क है उस टाइप से रिलेटेड चीजें चलती हैं। रिसर्च बट में रिसर्च। एनालिसिस करेगा ना, अभी तो बताया होगा इन्होंने। हाँ एनालिसिस, बताएं। पूरा स्टैटिकल एनालिसिस जो है वो एसपीएसएस की तुलना में जल्दी करके देगा। अच्छा अगर आप अच्छा। टेबल उसमें देंगे तो ऐसा भी होगा एआई में कोई ना कोई बोर्ड। लेकिन डर लगता है। हम्म। अब तो डर- ये एआई के नाम से ही डर लगता है कि जो भी चीज हुआ वो पब्लिक हो जाएगा तो कोई नहीं नहीं फायदा नहीं है नहीं रिसर्च का। नहीं नहीं। क्लाउड में कोई भी चीज जो है वो पब्लिक
होने का दूसरा सेंस होता है, पहले होता था जब सर्च इंजन काम करता था। अब तो हम्म हमारा क्लाउड डॉक्यूमेंट हमारे ईमेल पर रहता है ना। हम्म। तो हमारे ईमेल के डॉक्यूमेंट को कोई भी नहीं ले सकता। हाँ, वो तो है सर। वो इनक्रिप्टेड होता है, बिल्कुल इनक्रिप्टेड। मतलब जो कंपनी बनाती है, वो जैसे गूगल है, तो गूगल को भी नहीं मालूम कि आपका ये कैसे ओपन किया जाएगा। इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंपनी को बहुत सारे लीगल एक्टिविटी करनी पड़ती है, अच्छा तब अच्छा। कहीं जाकर उसको इनक्रिप्ट को ओपन कर सकते हैं। नहीं तो वो उनके एम्प्लॉयज या उनके किसी टेक्नीशियंस या उनके इन लोगों को नहीं मालूम होता कि कैसे इनक्रिप्शन को खोला जाए। लेकिन जब उनकी मीटिंग्स होती है, फिर उसके बाद फिर उन जो भी उनका प्रोसेस रहता होगा लीगल, जब तक कोई चीज नहीं होगी फिर उसको ओपन नहीं कर पाएंगे। तो इनक्रिप्टेड अगर इतना सेफ नहीं करते तो टेक्नोलॉजी यूजर फ्रेंडली नहीं रहती। हाँ जी सर। हम्म। लेकिन मुझे बार बार लगता है कि प्लैगरिज्म जो होता है उसको चेक करने के लिए, जैसे टर्निटिन है, अब टर्निटिन एआई भी आ गया है, हम्म। एआई के लिए भी। हम्म। और जो अब ग्रामरली और ये सब बाकी तो थे ही, हम्म। ऐसे भी कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर भी हो सकती है जिसको कि मतलब अफोर्डेबल भी हो, कि मतलब अगर वो पर्सनली अफोर्ड भी कर सके, कि मतलब 40,000 तक, 50,000 भी चला गया, चलो कोई नहीं, किसी तरह से कर लिया वो 4-5 साल के लिए। चंद्रा जी को मालूम है ये बात। अच्छा अच्छा। देर इज अ टूल कॉल्ड उरकुंड भी है सर, आपको हाँ, इन्फ्लुएंट से। उर्कुंड बहुत टाइम से चल रहा है, यूजीसी का। अभी वो स्टॉप हुआ मैडम। गवर्नमेंट इज यूजीसी इज आल्सो टेकिंग केयर दैट समथिंग लाइक टर्निटिन। एक्चुअली क्या होता है मैडम, मेन आपको टर्निटिन मानना पड़ता है, उसका डेटाबेस अच्छा है। हम्म। इट विल गोइंग टू टेक ह्यूमनाइज कंटेंट एंड आर्टिफिशियल कंटेंट वेरी इजीली। हाँ, एआई को तो बहुत दैट इज जल्दी डिटेक्ट कर लेता है, टर्निटिन जो अभी ह्यूमन रिसेंट है। कंटेंट एंड एआई कंटेंट को बहुत जल्दी पकड़ता है वो। एंड इवन वी कैन कन्वर्ट एआई कंटेंट टू ह्यूमनाइज कंटेंट थ्रू एआई टूल ओनली, वी कैन आल्सो डू दैट। ओके सर। मैंने टर्निटिन तो यूज किया, बट आई हैव नॉट यूज उर्कुंड, क्योंकि उर्कुंड हमारे यूनिवर्सिटी में यूजुअली रिसर्च स्कॉलर्स यूज करते हैं। बट टर्निटिन मुझे लगा कि आज की डेट में एआई को डिटेक्ट करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसकी ये फीचर जो है इसके पास है, टर्निटिन के पास, एआई वाला। Turnitin, to be my first preference is Turnitin only, because it is a fantastic tool. It will going to detect in AI and non-AI, and once it has been done means nowhere it will going to search in all the database connected to the world. Very huge database. ओके सर। So some other software is not available which is affordable No, no, to the madam. Actually, researcher. there is a software black check is there, and you can go with that black check also. But as you say that tomorrow, if your data got compromised, what will you do? That is the reason I am thinking twice to think. In research point of view, it is left to you. It is opinion, and you can take a call whether you can put the data onto the this kind of tools or not. As my first priority is to go for official tools like Turnitin only, Yes, sir. Yes. so that you will not be having any issues and your work will get recognized. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Even data analysis also there is a tools for it, and we can able to do. Tableau is there, Python is there, R Studio is there. Anybody is using, I don't know. And using these tools, we can able to make data analysis and interpretation very fast. Yes, sir. But I have used one software for making graph, Origin. Origin, Origin is there, madam. yes, Origin is there, but it's a very powerful. Now it has been so many features. Earlier, the Mm. earlier one, I mean, Origin 6 point something, it was very, I mean, old one. It was not having different features. Now it's very, I mean, very Robust. good compared to the Mhm. previous one. Mhm. But Even I don't SPS is have. also SPSS is also good, madam. Okay, sir. I have not used Have this you, one. I don't madam? know how to. SPSS software is fantastic. SPSS 25, 26. You need to purchase. Institution has to purchase it. One is for this is for quantitative research is for SPSS, and qualitative research is for NVO. Okay, sir. And always the name comes first in quantitative research. If you want to have playing with the numbers, means SPSS is number one.
Okay, sir. Because making the things like ANOVA, and other regression analysis and other analysis can be easily taken care here without any much time. Mm-hmm. But the same can be achieved in open source with RStudio with some coding without any software. If you're having some kind of Python and knowledge and other things, we can do it in free of cost in RStudio. The same output can be taken. कुमुद, आपका कितना पेपर पब्लिश है? सर मेरा तो केवल 10 ही है। 10 है। और पीएचडी भी है? हाँ जी, पीएचडी भी है मेरी। और सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स है सर। फिजिक्स। अच्छा, तो फिजिक्स वाले तो कर लेंगे। मुश्किल भी होता है फिजिक्स में। प्रैक्टिकल करते करते कुछ जैसे आप कोई चीज का प्रैक्टिकल करने जाते हो तो क्या सोच के जाते हो? क्या सोच के जाते हैं? बस हमें बच्चों को सिखाना है और बच्चों से काम कराना है। जैसे कि मुझे इस बार स्किल पढ़ाने का मौका मिला। रिसर्च। फर्स्ट सेम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर को स्किल स्किल में बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन रिसर्च करने के लिए कुछ बात। रिसर्च करने के लिए। अगर रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो बेसिकली पहले तो कुछ कोर्स वर्क करानी होती है, जैसे आपको क्या बोलते हैं। आपके रिसर्च करना। अच्छा, मेरे को रिसर्च करना है तो क्या करते हैं? हाँ। लिटरेचर सर्वे। मेरा टॉपिक पहले से डिसाइड रहता है कि मुझे इस पे काम करना है। उसके बाद उसमें जो है प्रीवियस वर्क जो हुआ है और जो प्रेजेंटली दिमाग में आ रहा है, दोनों को ही लेके चलना होता है। उसके बाद अपना डेमोन्स्ट्रेशन देना होता है, चाहे आप ऑब्जर्वेटरी के थ्रू करें, चाहे थ्योरेटिकली आप उसको प्रूव करें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है। तो इस टाइप से ही मैंने बेसिकली ऐसे ही किया है अभी तक तो। और जो पीएचडी के बच्चे हैं, जैसे कि मेरे पास आते हैं पूछने के लिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे करनी है, तो अभी तो हमारे यहाँ सिनॉप्सिस सबमिट हो रही है। तो कभी तो कभी नहीं लगता है कुमुद की कुछ ऐसा काम करे जो नोबेल वर्क हो? इच्छा तो होती है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि इतना यूनिक वर्क हो। अभी बहुत आसान है। अभी सर कोई पेटेंट भी नहीं ट्राई किया है तो अभी ये नहीं कह सकती कि मैं यूनिक वर्क कर सकती हूँ। अच्छा, क्या चीज है जिसके बगैर रिसर्च नहीं हो सकती? क्या चीज है जिसके बिना रिसर्च नहीं हो सकती? इच्छा के बिना तो नहीं हो सकती है। गलत। अच्छा, क्या चीज है जिसको रिसर्च का हम लोग पर्यायवाची बोल सकते हैं? रिसर्च का पर्यायवाची। एक प्रकार से मतलब उसके बगैर तो हो ही नहीं सकती रिसर्च। वो चीज सर्च करेंगे, देन अगेन वी डू रिसर्च। सोचना पड़ेगा सर। प्रॉब्लम। यस, राइट सर, आई एग्री ओवर हियर। और प्रॉब्लम अगर नहीं होगी तो सर्च ही नहीं करेंगे उसका सॉल्यूशन। अच्छा, और क्या चीज ऐसी है जिसके बिना प्रॉब्लम नहीं हो सकती? जिसके बिना प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। हम्म, जिससे प्रॉब्लम होती है। बताओ, इतना बड़ा बड़ा रिसर्च करते सब सब मुंह में है वर्ड लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। बोलो कोमल। क्या हो सकता है सर? सोचना पड़ रहा है मुझे भी कि प्रॉब्लम क्या है। हाँ, रिसर्च बिना प्रॉब्लम्स के नहीं होती है। प्रॉब्लम्स क्रिएट कौन करता है? कौन करता है बताओ? सराउंडिंग्स ही होती हैं सर, जो हमें नहीं। करने के लिए मजबूर करती हैं। नहीं। आप प्रॉब्लम। बताएं। प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है? नीड, आवश्यकता। वेरिएबल। अच्छा। क्या होता है कोमल? वेरिएबल्स। हाँ। वेरिएबल्स Affecting the दैट factors, प्रॉब्लम variables affecting the प्रॉब्लम प्रॉब्लम problems कब होती है? प्रॉब्लम कब होती है? जब कोई चीज create वैरी होता है, करती स्टैंडर्ड से deviate होता है। है। यस, है ना? और यस। अब किस चीज से वेरी कर रहा है उसके ऊपर काम। Affecting it. रिसर्च है ना? गलत तो नहीं है कुमुद, बताओ ना। नहीं नहीं सर, आप सही कर रहे हैं।
आपके जो आपने बताया है वो बिल्कुल ही अच्छा सही बताया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक रिसर्च स्कॉलर को, रिसर्च हम्म स्कॉलर इवन इज रिसर्च, चाहे वो प्रोफेसर ही क्यों ना हो, तो रिसर्च स्कॉलर को किसके साथ प्ले करना चाहिए, किसके साथ किसके प्ले साथ करना? का नाम रखना चाहिए वेरिएबल्स के। मतलब आपने अगर जैसो कोई सर्किट बनाने के लिए आपने कितना वोल्टेज दिया, कितना नहीं दिया, कितना बाहर से आया, क्या चीज, हम्म क्या एलिमेंट उसके अंदर आया, वो हम्म कौन सा एलिमेंट है जो उसको जैसो वेरी कर रहा है, अधिक चार्ज दे रहा है या कम चार्ज दे रहा है, या कुछ भी जो भी आप लोग का रहता हो। तो हाँ जी वो उसी को तो हम अलग अलग उसके डेटा इकट्ठा करते हैं ना, उसी हाँ उस जी। वेरिएबल्स के, है दैट ना। इज नोन एज पैरामीटर्स। हाँ, पैरामीटर्स जो वेरिएबल्स उसके हम बनाते हैं, बनते हैं पूरे, वो वेरिएबल्स आंखों के अंदर घूमने लगते हैं, हम्म और फिर हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। बिल्कुल सर। तो आप, बिना पैरामीटर्स के तो काम नहीं हो सकता रिसर्च में, क्योंकि कोई ना कोई पैरामीटर लेके ही हम अपने वर्क को हाईलाइट करते हैं कि हाँ इसी वजह से हम ये आंसर आया है। एक चीज मुझे ये बताओ, हाँ जी सर। 1 2 3 4 वन टू थ्री फोर। क्या हाँ मतलब, दैट इज अ नंबर सर। क्या मतलब है नंबर? इज नंबर नंबर। करता है, एग्जिस्ट करता है नंबर? तुमने पैरामीटर बोला इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नंबर हाँ नंबर एग्जिस्ट करता है? अगर मैं, नंबर। तुमने क्या समझा? मैंने तो नंबर से समझा कि इमेजिनरी समथिंग इज दैट इज। मैंने बोला 1 मोबाइल, हाँ हाँ विजुअल है, हाँ विजुअलाइज है। तब 1 का वैल्यू हुआ ना। हाँ जी। अगर ये मोबाइल भी नहीं, कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये संख्या को लेकर हम क्या करेंगे? संख्या इमेजिनरी। को हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्या मतलब है संख्या का? जब तक संख्या जो है किसी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक उस संख्या की क्या वैल्यू? पैरामीटर भी किसी न किसी वेरिएबल को जोड़ता है ना, किसी न किसी चीज को। हाँ जी सर बिल्कुल। पैरामीटर तो जोड़ते ही है, अगर अदरवाइज काम कैसे करेंगे? पैरामीटर किसका पैरामीटर? पैरामीटर है जैसे कि हमने कोई प्रॉब्लम लिया है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो पहले तो पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे दैट इज को रिलेटेड टू सम वेरिएबल, किसी हाँ, वेरिएबल के साथ जुड़ा होगा। उसके बेसिस पर हम उसको प्रेजेंट करेंगे कि हाँ ये जो है पैरामीटर्स की वजह से ही चेंज। वही वेरिएबल नाश्ता करते खाना खाते समय दिखना चाहिए। हाँ अब तो मजा आएगा। वही ये बात। रिलेटेड लिटरेचर के साथ जुड़ना चाहिए, दिखना चाहिए। हाँ ये बात तो है। सर आपका फील्ड क्या था, मतलब क्या फील्ड है आपका? मेरा फिलॉसफी। अरे सर बहुत ही डिफिकल्ट फील्ड है। तुम लोग सब फिलोसोफर। सारे फिलोसफर बन जाते हैं पीएचडी करने वाले, बट ये फिलोसफी जो वर्ड है वो तो खुद ही इतना डेप्थ है और इतना ज्यादा है कि पता नहीं कैसे पढ़ पाते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ बहुत मुश्किल टर्म है ये। हम लोग, टर्म मैंने भी और मैंने सब्जेक्ट भी बहुत मुश्किल है। मैंने दोनों चीज पढ़ी है, फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र। अच्छा अच्छा। अब क्या हुआ इसका मतलब? भारत बड़े। तो सर भारत ट्रांसलेशन है। भारत भारत में रहती हो, हाँ जी सर। इसीलिए बताओ, दोनों पढ़ने का क्या मतलब? सर इसीलिए तो सारे जितने भी लोग आपके साथ जुड़े और, हैं तब आपको सैल्यूट करते हैं सर। और दूसरा नाम है दर्शन शास्त्र, नाउन। हाँ जी सर। दर्शन शास्त्र नाउन है, नाउन, ग्रामर का। हम्म। तो नाउन का क्या ट्रांसलेशन हो सकता है? नाउन का ट्रांसलेशन हो सकता है। संज्ञा, संज्ञा ही बोलते हैं। हाँ, संज्ञा का क्या ट्रांसलेशन कर सकती हो? कुमुद का ट्रांसलेशन हो सकता है जर्मन में? नहीं सर, नहीं ना। बस प्रोनाउंसिएशन ही हो सकता है कि हाँ, प्रोनाउंस करने वाले ही कुछ अलग तरीके से। खमुद बोलेगा, खुमुद बोलेगा, ये बात अलग है, पर है तो कुमुद ही ना। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। है ना।
तो नाम का नहीं होता, तो नाम किसका होता है? नाम व्यक्ति का होता है, स्थान का होता है, सिद्धांतों का होता है। जी सर। तो वैसे ही दर्शन शास्त्र एक नाम है, सिद्धांत है। दर्शन शास्त्र में भारतीय दर्शन की अध्ययन स्टडीज होती है। अच्छा अच्छा। और फिलोसफी फिलोदेनफोसिया जो है, ये वेस्टर्न फिलोसफी और उनके अध्ययन करता है, अच्छा जिसमें प्लेटो और बाकी सारे आते हैं आपके साइंटिस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये होता है दर्शन शास्त्र। अलग अलग तुम लोग ओके। कल कल का भी मौका मिलेगा तो इस पर बात करेंगे, साइंटिस्टों के लिए स्पेशली। ठीक है सर। अच्छा साइंटिस्टों लगेगा। साइंटिस्टों को कैसे देखना चाहिए, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे दुख होता है कि इतना बड़ा ज्ञान भगवान ने साइंटिस्टों को दिया है, थोड़ी सी दृष्टि मिल जाए तो कितना मजा आ जाए। सही बात है। मैं उसमें कल जब बात करूंगा तो हम लोग बात, मेरे को याद दिला देना खाली पीरियड में। तो हाँ उसमें जी हम सर। हम लोग दो तीन चीज पर बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेद, है ना? व्हाट इज हम्म। ऑफ ऋषि, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दृष्टा, है ना? हाँ हाँ। हाँ जी इस सर। इसके ऊपर बात करेंगे, तब समझ में आएगा कि आप लोग कौन हो। ठीक है। अच्छा लगेगा सर। कम से कम आपकी बात इस टाइप की सुनेंगे, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में ही बात करते हैं जब भी मतलब वाइंड अप करना होता है या शुरुआत होती है। कल इसी बात बहाने कुछ पता चलेगा। कल कल श्रीनिवास सर का लेक्चर, कल मालूम चंद्रा, उनका लेक्चर है श्रीनिवास सर का मॉर्निंग में। यस सर। हम्म। हो गया, आप ओके लोग कर, सर। कर लिए होंगे आप सबको ही। अब एक दो और बता दो चंद्र नहीं तो लोग सब फ्यूज हो जाए मामला। Yes, sir. Actually, tomorrow there is a sir engagement with we are training around 1,000 people in AP on generative AI and other things. AP government nominated. Tomorrow there is a workshop from AP government दो बजे, for 5 days. 2 बजे के बाद है ना? सर का तो आफ्टरनून का बाद है सर, मॉर्निंग में नहीं है। मॉर्निंग हाँ। में इंट्रोडक्टरी होता है, उसके बाद दी जनरेटिव एआई वर्कशॉप इज देयर। वर्कशॉप में मेरे को क्यों नहीं बुलाते हो भाई? बिल्कुल सर, वी विल नोट डाउन सर डेफिनेटली। सर को बोलूंगा कल मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट करिए। Okay, I think now I just wanted to ask you any doubts and how do you can you able to do it? Any Yes, sir. We doubts? will try whatever you have given to us, like Gemini. Uh, there is a Okay, semantic scholar, connected papers, okay, quick quillbot, and what is chat box. You have given some of the things, so we will try over these things. okay. Madam, now one more question I would like to ask. This is related to the things which we got covered, that the content creation is got done and the things has been done. How to make it more personalized learning? Anything, any idea can we able to do more personalized learning? Something like making controlling the pace of a classroom. Any idea? It should be question based for the interactive, just to make classroom very interactive. There should be some, I mean, questioning directly to the students, like small questions or one line question or MCQ type question. And the class can enjoy that, I mean, that lecture. I feel so. So in AI, we can make some, I mean, some questions, MCQ type questions, or so that the class, I mean, the student can write immediately and send to us. Okay. How many of you using PowerPoint in your classrooms now? I think majority they're going to use it their PowerPoints. Am I right? Yes, sir. For PowerPoint, we are using in the class. Okay. There is something Animation. called a reflection spot.
we need to put it on every point of time. What exactly the reflection spot? Reflection spot. I don't have any idea. I just add some animation in it only. Reflection spot in the sense based on the previous content. Suppose you're in a videos also we can make a reflection spots like for example in any content based on the two or three slides you have put some content. Based on this three slides immediately after that there is a reflection spot to think about the previous slides and answer it, then only should move further. So that continuous evaluation making them more engaging and interesting in their learning, that is where we need to put the reflection spots. And other things apart from this we can able to generate a lesson plans using this kind. Anybody generating the AI based lesson plans? No, sir. Not using. Not using. Okay, let me share my screen. And personalized and adaptive learning is very important today. How many have you heard about the name called QReport? Anybody using? Anybody heard about it? Heard about it by others. Nearpod. I think many heard about Nearpod. Yes, sir, but not used till now. Not I have used. not used. Let me put this. It's a very good tool. First, observe the things what we are doing now. You'll be engaged for a while. I hope everybody having mobile and other things. Let us do some things which is very important for our adaptive and personalized learnings. As we discussed in morning, what exactly personalized learning, how to make it more personalized to the students, that can be achieved. This kind of tools you will be using, making sparking the curiosity in the lessons. Let us do it from here by making using generating the lessons. Let us take something on the madam. You're telling us about the astrophysics, right? Your topic is. Yes, sir. So Space let us select the same topic. It should be 12th plus grade. Any additional criteria you want to mention that can be mentioned, or something it is optional is also possible. I'll click on get the lesson plan. So you see the things. Just as a subject expert, you need to speak on this now. Create a pin, putting it together. Isn't 1 minute, madam. Don't worry. You just observe. I request everybody to first observe my screen. Then only I'm going to give you the things. Which demo takes somewhere around 20 to 30 minutes. Demo. Understand, experience. Then only we will do. We will move further. I request everybody to participate. First, make experience. Then I'm going to tell you what to do and how to do with this. Please join using the URL. I'm going to paste the URL. If you're having a Google Lens, please participate using Google Lens or through directly typing query.live and entering the pin. Dr. Mehta, you are using the query pod? No, sir. You said yes, yes. That's the reason I just asked. Okay, okay. I request everybody to join.
Only 8 people participated. What about the rest? I have pasted the URL in the chat box. Using that also can be possible. Opening your mobile as a Google Lens also possible. Participate and experience we will do further. I have given you the URL in the chat box. Using the URL you can directly join. Yes, don't worry, madam. Your nickname is coming. But what about the rest? The participants are 28, not even 20 joined. रियल नेम आ रहा है, बस निक नेम तो मैंने डाला ही नहीं। रियल नेम डाल दीजिए सर। नहीं, रियल नेम का एक डाल दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है सर। इट इज गेटिंग एनक्रिप्टेड। मैंने तो कर दिया है, संजीव लिखा आ रहा है। नहीं आएगा सर इसके अंदर वो। मैंने मेरा सर जॉइन। आपका निक नेम ही बनेगा। अच्छा। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट, वो आने दीजिए। ऐसे ही होता है इसके अंदर, रियल नेम नहीं आता है। टू मेक इट मोर कॉन्फिडेंशियल इन आवर टीचिंग प्रोसेस, इट विल नॉट गोइंग टू कम। And I think how many could able to join? Only 10. What about the rest? Any problem to get join? हो सकता है कुछ लोग मूवमेंट में है, बट एटलीस्ट मिनिमम 50% और 5-6 लोग। मैं तो इसमें लिखा आ रहा है ग्रेट यू आर इन निक नेम, तो क्लिक कर रहा हूँ तो उसमें कुछ आ ही नहीं रहा है लिखने के लिए। 1 मिनट सर, स्टार्ट करना है। मैं 1 मिनट सर, नॉट एट स्टार्टेड, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स। सर हमें सिर्फ हमारा निकनेम ही दिखाई देगा। वी आर वन नॉट मिनट एबल मैडम, टू अब एंटर दिखेगा। इट इज। 1 मिनट। नाउ कैन यू एबल टू सी द स्लाइड? यस, इट इज हैपनिंग ऑन अ बिग स्क्रीन। यस, इट यू गोइंग टू सी इट नाउ। हाँ, ये आया ना, फोकस करने पर आएगा। यस, फोकस में ही आएगा सर। हाँ, हाँ, इनटू लेट द अस मूव फर्दर। what do you already know about the astrophysics and its significance? Let me start the trigger the activity. Ready, set, go. फोकस के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा आप उसके अंदर टाइप कर लीजिए। फोकस के अंदर क्लिक करके टाइप करना है। What do you know? क्या क्वेश्चन? What do you know already? What do you already know about the astrophysics and physics? Nothing लिख देता हूँ। कुछ भी लिख सकते हैं ना? यस यस सर, यस सर, गो अहेड सर। एक आंसर आ गया। अभी 6 लोग सबमिट किया सर। और एस्ट्रो 1/3 दिखा रहा है। Because 3 attempts I have made it, I'll going to tell you that per person 3 attempts is there. I'll going to, we can make it that settings part we can taken care. But attempting after first slide, immediately the second slide is a question. Join Kilo will bring it. I request everybody to participate. If you experience it, you'll know how to apply it in your class. That is the reason I'm making you experience. Then I'm going to tell you the settings part, how to take care of a bit. अभी टोटल कितने ज्वाइन हो गए? अभी 9 लोग आए सर। हो सकते हैं 2-2 भी अटेम्प्ट हो सकते हैं उसके अंदर। पार्टिसिपेंट्स कम लॉग इन हुआ है। 10 पार्टिसिपेंट्स ना? हम्म। उसमें एक मैं हूँ। सर सेम क्वेश्चन ही 3 बार आ रहे हैं, ठीक है वो ना? मैंने सेटिंग्स में दिया है मैडम, दिया हुआ है। हाँ यू आर ओके एब्सोल्युटली ओके 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 ठीक है। It's happening on the big in focus.
I'll not going to vote it. Please don't attempt the voting. We can disable it. I'll just remove the voting now. 1 second. I'll just end the voting. Don't take it into voting now. I'm just ending the voting of answers. Can you able to see the answers? Yes, nothing आ रहा है ना लिखा हुआ, मतलब जो मैंने लिखा था आंसर, सबके आंसर आ गए. Outer space. Somebody has written astrophysics is a branch of space science. They have written, and I don't know. It's about the celestial object, understanding the planetary motions. These are the answers we got it right. Why do we do it now immediately after first slide? Why we need to insert the question? What is the reason now? This is called reflection spot on based on the previous content. We need to put the reflection spots into our classroom teaching learning so that people will be engaged and accountable for each and every content. Now let us next get into the next slides. My slide is visible to you all in Yes. your mobile. Yes, sir. Yes. Understanding the astrophysics, and something is written and the content has been generated through AI only. Astrophysics examines the celestial bodies, stars, planets, galaxies, phenomena, black holes, supernova, theories, Big Bang theory, relativity, tools, telescope, and satellites. And let us move to the next slide. Discuss with a partner. How does astrophysics contribute to our understanding of universe? Important of scientific advancement. Now, one more activity. There is a written again. You're going to write something here. Let me minimize this. An activity is been started. What will your feedback say? Write your answer to find. What is the significance of the Hubble Space Telescope in astrophysics? I am increasing the timer also as and when I am controlling the pace of your activity. अभी क्या करना है? सर एक एंट्री करना है, मैं अभी बताते एक्टिविटी है इसके अंदर एक फीडबैक है ये. लेट अस टेक आई थिंक ओनली 4 सबमिटेड. अभी मुझे तो समझ नहीं. सर सर एक्टिविटी है, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन ही आया है. मैडम फोकस के ऊपर क्लिक करेगा तो आपको एंटर कर सकता है. ठीक है ठीक है. Very good. हाँ. What is the significance of the Hubble Space Telescope in astrophysics? Can you able to attempt it now? हेलो सर, क्वेश्चन दे रहा Yes, है. madam. सर मैसेज ऐसा आ रहा है, ग्रेट वर्क, यू सबमिटेड ऑल योर रिस्पॉन्सेज फॉर दिस राउंड. वो हो गया मैडम, आप सबमिट कर दिया. अभी मैं थोड़ी हाँ. देर वेट करिए, मैं अभी इसको करता है. Can you able to see the results now? Yes. Yes, sir.
ग्रेट वर्क। Somebody has written in Hindi. इससे भविष्य के बारे में जानना है. And to observe motion of planets, to know space. Why I'm giving you these kind of things? Again, there is one more thing. Immediately after this, whiteboard is there. There is a whiteboard to draw. Draw a diagram illustrating the life cycle of a star from its formation to supernova. Just to try it out. There is a fun activity here. And later on, I'll exit it and I'll show you the report. Started in your mobile. Two submitted. हाँ. तो ये क्यूरी पॉट पे ही Drawing. सबमिट करना है? Yes, madam. ये क्यूरी पॉट पे ही सबमिट करना है या ये? Yes, yes. उधर ही सबमिट करना है मैडम. अच्छा अच्छा. सर अगर क्यूरी पॉट बंद हो गया हो तो दोबारा नहीं चल सकता है क्या? चलेगा मैडम. वो आपकी query.live join pin you can join. अच्छा अच्छा. मैंने URL दिया हुआ है. अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती Want to see the output? यस सर, अभी प्रोसेस हो रहा है. यस सर. आ गया सर. डेटा देखिए आपके सामने. Now I just wanted to show you. This is also an activity. Don't need not to worry. Let us jump in and end this lesson now. What did we do? We have generated a lesson using AI, and AI integrated the activities on behalf of it of ourselves. And now it is been using for our. Let me edit it and show you some of the things what is happening now. Can you able to see? This is a open-ended question, right? Again, coming with the first slide is the content, second slide is open question, third slide, fourth slide, and fifth slide is a feedback. There are so many things we can able to add it here as an activity. Let me click on new slide, open question, drawing, polling, word cloud, AI feedback, AI whiteboard. These are the activities we can able to integrate into our content. Is it clear? Now, Yes, how sir. to do it? We can, if suppose if I want to add a polling, I'll just add a polling question here. Something on astrophysics. Madam, can you say something on astrophysics question? Polling के लिए कुछ कुमुद. Evolution of star. Evolution of a star. evolution of Stars. stars. Okay. ऑप्शन वन मैडम बताइए आप ऑप्शन वन में क्या लिखना है. दिस इज लाइक ए वोटिंग. मिल्की वे वट एवर. वो तो गैलेक्सी हो गई सर. आप बताइए मैडम क्या लिखना है. इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स प्रोसेस हो सकता है, उसका कुछ स्टेजेस हो सकते हैं, तो वो बता दीजिए. प्रो स्टार. प्रो स्टार. ओके. रेड जाइंट स्टार. नेबुले. स्टार. ड्वार्फ. ओके. dwarf. Okay. And last one. Nebula, you are telling something, right? Nebula. Okay. Now, what did I do?
This is like a polling. And we can add one more options also, like option 5, up to 6 options we can able to integrate here. And now you can able to see now what we need to do. We can able to integrate the polling option in between the content. That is also possible. Suppose we don't want to use for polling, word cloud can be generated, drawing can be generated, open question can be generated, AI feedback can be taken care, and we can able to minimize the things. And why do we do it after fifth slide or sixth slide? Your content might be related to evolution of stars. Immediately after evolution of stars content slide, we are putting a activity. Why do we do it? What is active? Why do we need to put the activity here? Draw Just to attention. just to make interesting and just to have a interactive, classroom. Yes, Interactive. absolutely right, madam. This is called reflection spot. Based on the previous content, you are putting a reflection spot. This is the reflection spot you need to understand, then only you can move further. And every slide you can put a reflection spot and ask the students to give an output to this based on the previous content, or else they cannot move further. You're going to understand the depth of the content understanding with the students. But now I just wanted to come out of it. I'll go to click on home. I will speak to you in the things. There is something called create a lesson with AI. Now, what did we do? Generating a lesson plan with AI, right? I just repeat the process. Note down everyone. First, we will going to use this as a query pod for adaptive and personalized learning. And it's an assessment also, that is for formative assessment. Try to understand this one. It's a formative assessment. Clicking on create lesson. One second. Generate a lesson. Now, suppose if I want to enter a topic on cyber security, 12th plus grade, selecting that's into 12th. If I want to add something on threats or something like that, click on the get lesson. It will going to detect the pedagogy, it will going to detect the topic, it will going to detect the learning objectives, adding the interactive activities by itself. Now, ये तो एक एआई बेस्ड है, बट इसके अंदर हम हमारा खुद का भी पावर पॉइंट डाल सकता है, वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ आपको कैसे करना है वो भी. सर एआई हाँ के जी. थ्रू ऑटोमेटिकली Yes. जैसे 10 या 15 स्लाइड्स बनानी है हमें, तो ऐसा हाँ, नहीं हो सकता कि हमने एआई के थ्रू जो बस केवल टॉपिक डाला है 15-20 स्लाइड्स ऑटोमेटिकली बन के आ गई हो. इसके अंदर स्लाइड्स बना सकते हैं ना मैडम आप, मैं वही बना रहा हूँ ना इसके अंदर. आप ये अपने स्लाइड ही आप तो से. है मैडम, आपका देखिए इधर 10 स्लाइड बन गए ना ये. This is slides only. But one more thing here is, if you want to get the slides, there is a one more app called Gamma. I think many know about it. How many knew about this Gamma? Yes, sir. यस सर. Gamma.app, you know about it, right? You can generate the slides from Gamma also. Now I wanted to show you, I just wanted to tell you something. You can upload the slides which if you have anything in offline. If you want to edit the activity, you can edit the activity. Students need not to vote, means you can turn off the voting here. Open-ended question, AI feedback is there. Let me show you the customization up to 4,000 characters that is there. We can control the time and pace of the student. Slide 7, AI whiteboard there. We can able to disable. If you don't want this one, you can put the word cloud here. Polling is there. Immediately after 10th one, I am going to put a word cloud here. Let me take a word cloud. What is a word cloud? नहीं मालूम सर. मैडम अभी अटेम्प्ट करेंगे ना, अभी एक बार देख लीजिए इसको. हाँ जी. AI feedback. Okay. Now I request everybody to participate again.
Please participate again. Yeah. Some song is playing. Yes. If वो आपको इधर होता है, मैं म्यूट किया अभी. वो खड़े हैं क्या? क्या सर? नहीं. क्या मैडम? अभी 3 लोग जुड़ा हुआ है. Come again. Let us start. If you experience it, you will going to come to know. I request everybody to attempt it. I'll reduce the time. It will be wind up with the very within 2 minutes. I'll show you the settings part now. As early as possible, attempt. Click on focus and attempt it. My voice is audible. Yes, sir. Yes. If you want the URL, there is a URL here, and you can join it. And click on the things query.live and enter the pin. That's all. Let me click on results and we will dive further. And one more activity. I'll reduce the time to 1 minute.
It's a drawing. One more activity, word cloud. You have not experienced this one. Experience this word cloud now. Many people should be there, then only word cloud will going to become huge, but nobody is participating. Around 5 to 6 people, word cloud will be very less only. It's a cloud of words, that's all. के बाद लास्ट कर दीजिएगा चंद्र। yes sir, मैं थोड़ा सा एक सेटिंग्स बता के सर एंड शोइंग देम द प्रोसेस, दैट्स ऑल। इसमें रिपोर्ट भी जनरेट होके आता है सर तुरंत, कितने लोग अटेम्प्ट किया, कितने आउटकम। अच्छा। एक्चुअली इसके अंदर बहुत ज्यादा वर्ड होता है ना, इकट्ठा बन के वो एक वर्ड क्लाउड बन जाता है, ज्यादा लोग अटेम्प्ट करेगा तो। लेट अस क्लिक ऑन पोलिंग। सर ये तो फिशिंग के बाद रुक गया, आ नहीं रहा है इसके बाद। एक ही बार सबमिट कर सकते हैं ना मैडम पोलिंग। अच्छा अच्छा। सर मैं तो एक्टिविटी में से ही निकल गई, आई डोंट नो कैसे। I think you got pressed it out, madam. Now again you can join or else you can learn it. Now, एक और small activity reducing the time. Just attempt it as a 1 minute activity. Just feedback. Enter it and I'll end the lesson. I wanted to show the report to you all. Last slide.
Now I just wanted to end the lesson. I'll show you the report. Can you able to see the report now? Students wise, activities wise, I can give you the report instantly. Student wise, you are asking the name, suppose First Smile or Mittal, Sangeeta, Swadesh, Vinay. The names was earlier it got encrypted, but you can able to see the name wise. I can give you the report on Mr. Mittal is attempted 40%, attempted 2 activities, and we can see the responses. Based on हाँ, this, they इसमें can से take. मैं साइन आउट हो गई, इसमें से मैं निकल गई थी बीच में से, Okay, पता okay, नहीं madam. कैसे। हाँ, नो इश्यूज मैडम, फर्स्ट टाइम में तो कुछ दिक्कत होता है, धीरे धीरे समझ में आ जाता है. Now, Madam Sangeeta has attempted only one question, and Swadesh attempted all the questions. Now you can able to see his data now, and Vinay attempted also the questions with answers now. And we can generate and download this report also. How do we use this report as an outcome of the class? We can download the report in the form of Excel. Let me show you. The report will also come fantastic here. Can you able to see the data now? Everything coming to us in a form of Excel. Let me show some of the biggest, because earlier I was conducting the some same things with others. Can you able to see the data now? Yes, sir. Yes, sir. So data will also get automatically get connected to our requirement. Now the time come to we need to know how to do it. One is creating a lesson plan is fine. How to upload our own content to this? Clicking on create blank lesson, there is an option to upload our own PowerPoint to this platform. Let me explain the process again to you all. I'll just upload one of the PowerPoint to this platform. I'm uploading. It will take minimum 30 seconds. ये गोल गोल घूम रहा है कि नाच रहा है? घूम रहा है सर, घूम रहा है. वो थोड़ा सा नेटवर्क के ऊपर होता है. अब मेरा कंटेंट आ गया उसके अंदर. मेरा कोई कंटेंट बना के रखा था मैंने, उसको मैंने अपलोड किया. इसको ऐड करना है, पहले इसके अंदर पुश करना है. This is the first slide, second slide, third slide. There is a 3 dots. Adding a new slide, there is an empty slide will going to appear. As soon as an empty slide comes, you need to select the question based on the previous slide. Suppose it might be related to open-ended question. Suppose it might be related to polling. Suppose it might be related to feedback. Or if I want to add open-ended question, drag your cursor and mention something on based on the previous slide. Mention the question. Next, again after 6th slide, if you want to add another activity, 3 dots के ऊपर click करना है, add a new slide and select the activity you require to insert. Now enter the question. If you want to mention the cyber threats, make the cursor into that option 1, that is a malware. Second option might be virus. DDoS attack. Spam. And last one will be worm. Okay. Yeah. Immediately after the slides, if you insert this, don't give any empty slides. We can delete it. After each slide, you can add the activity. The similar way, you need to add the activity of all the 6 activity needed to be added. And clicking on start now, it will be generating a QR code. Note down the requirement as we do it. Clicking on start now, don't join now. Clicking on start now, it will going to create a QR code. Don't join.
one person you can join, at least one person for demo purpose. I'm not going to make the activity, just for demonstration. Anyone can join, only one, by logging into the you जो can copy the URL from here, you can copy the code, you can scan it and get it done. Let me go further. Until unless you make the movements from here, it will not going to move it in. And clicking on start activity is very important. Until unless you trigger the activity, it will not going to reflect into your students platform. This is very, very important. Next, going to the next slide, again going to the next slide, you have to start the activity. Then only it will going to trigger it on the students part. So I just wanted to conclude here. Any doubts? And since it has been recorded, sir will going to share it with you, and you can reach me out. And sir, I used to add me in the Google WhatsApp group also. I yes, can clear the doubts if you are having any doubts. WhatsApp यहाँ पर So by this tool, we can able to learn adaptive learning, making AI-based lesson plans, assessments can be taken care and personalized and make it more impactful and engagement to the learners. So by this, I'll stop. Any doubts we can able to speak if you want. Sir, yes, we have just concluded that tool. Any doubts they can ask me. मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दे रहा हूँ. Yes, sir, please. It's a fantastic tool, QueryPod. Use it into your classroom environment. Day to day, you can able to know the changes and making more impactful and engaging learning experiences. निवास सर को भी इंटर कर दूं. Yes, sir. I've added. Any निवास doubt? सर भी Please इंटर feel. हो गए हैं इसमें. Sir? मैं बोल रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स को कि श्रीनिवास सर इंटर हो गए हैं आपके ग्रुप में जो कल लेक्चर देंगे. Yes, sir. और चंद्र कुमार जी भी हो गए हैं. Any doubts for any of them? You can ask me. This is a tool which will be used for this kind of activities. हम्म. किसी को कुछ पूछना है? Any doubts? खूब अच्छा था. थैंक यू सो मच चंद्र कुमार जी. एंड Sir, thank you. बहुत मेहनत करी आपने आज सुबह से हम लोगों के बीच में, और खूब नहीं सारे नहीं सर. एप्लीकेशंस आपने हम लोगों को सिखाए. अम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार. Thank you, ऐसे sir. थैंक यू सर. Thank you. थैंक यू सर. It was Thank you, sir. very informative and interactive discussion. ऐसे ही हमारे प्रोग्राम में आते रहिए. नहीं आएंगे सर, बिल्कुल 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 आएंगे, जुड़े रहेंगे सर. सर सर एक बात बोलूं जाते जाते. हाँ. आज
ऐसा लगा कि 10th की तैयारी कर रहे थे, अच्छा बोर्ड एग्जाम की। आज सर ऑफलाइन में सामने होने चाहिए थे, इतना तब एंजॉय बड़ा अच्छा करके लगता। नहीं किया होगा ना पहले। चलिए शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में आप लोग सब आ जाइएगा। बिल्कुल सर। आइए। आएंगे सर, आएंगे, बिल्कुल मुलाकात फेस टू फेस भी करेंगे सर। I hope you all enjoyed, and we will meet you shortly whenever there is a chance. Sir gives us always very impactful, and sir का भी leadership अच्छा होता है। कभी भी हम सर से interact होते तो very interestingly, he'll also keen to learn everything. That is the reason we'll make always more innovative, and things has to be new. It should not be repeated, because he used to listen every lectures. I know about it. I have seen him that he used to keenly watch everything personally. That is the main point. Things will get a new things to everyone. Leader is first leading the row. That is the reason everything will going to conclude in a successful way. I just wanted to appreciate sir leadership, and I've seen his commitment, and things is getting concluded in very good form. Thank you, sir. Anyhow, thank you for the opportunity. We'll look after you on other Thank you, sir. sessions. थैंक यू चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you.